मत कर छोड़ दे, वो मुसलमान फराइज से भी महरूम कर दिया जाता है। जो मुसलमान सुन्नत को हल्का समझ कर छोड़े, वो मुसलमान फराइज से भी महरूम कर दिया जाता है। उलमा किराम ने लिखा है, जो फराइज से महरूम कर दिया जाए, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, उसको अंदाज़ा भी नहीं होता। इस सारी महरूमी की और हलाकत की इब्तिदा सुन्नतों को हल्का समझने की वजह से। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya Maulana Yusuf rahmatullah alaih dahulu telah mengatakan bahwasanya di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melekat kepada orang-orang Islam, dalam setiap satu orang Islam, apabila ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan membuat gentar orang-orang yang melihat mereka. Akan membuat gentar orang-orang yang melihat mereka, yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana sahabat terkadang cuma sendiri saja, tetapi karena menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membuat satu kerajaan menjadi gentar kepadanya, menjadi ketakutan kepadanya. Yaitu dituliskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam Hayatus Sahabah, yaitu tentang satu orang sahabat, Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu, yang mana diceritakan keadaan daripada Rib'i bin Amir pada waktu itu, yaitu keadaannya badannya kurus kerempeng dan bukanlah seorang sahabat yang tegap badannya, dan juga tidak memiliki pakaian yang bagus, pakaiannya lusuh, dan dia memiliki kendaraannya pun kendaraan yang sederhana, kendaraan yang kecil. Maka dia punya senjata yang tumpul. Maka dia pergi sendirian, tetapi dia bawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengannya, dengan penuh kesederhanaan, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datangi kerajaan Rustum, dan kemudian dia masuk ke dalam kerajaan Rustum tanpa satu orang pengawal pun berani untuk menahannya. Dan kemudian dia masuk ke dalamnya, jumpa kepada raja, yang mana dilihat pada waktu itu raja tersebut memiliki kursi singgasana yang terbuat dari emas, dan kemudian terbuat dari benda-benda yang sangat mewah dan sangat berharga sekali. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin ditunjukkan oleh sahabat ini tadi bagaimana hebatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada harganya apa yang telah kamu miliki dalam kerajaan ini. Maka Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu membawa keledainya dan kemudian mendekati singgasana tadi, dan kemudian dalam satu riwayat dikatakan diikat di bagian kepala daripada singgasana tersebut keledai daripada Rib'i bin Amir. Dalam satu riwayat lagi mengatakan bahwasanya di bagian kaki daripada singgasana itu diikat di situ tali daripada keledai Rib'i bin Amir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan bahwasanya singgasana yang kamu miliki hanya berguna untuk mengikat tali keledai saya, dan tidak ada hebatnya daripada tali keledai yang saya ikat di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja Rustum sangat tergentar sekali, sangat takut sekali melihat satu orang sahabat yang datang dengan penuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengan penuh kesederhanaan, dan dia tidak takut kepada siapapun. Maka akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raja pun takut dan kemudian ingin mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh orang ini. Rib'i bin Amir kemudian mengatakan, aku datang kemari wahai Raja Rustum, yaitu untuk menyuruh kamu pergi dari kerajaan ini. Ketika aku sudah datang sampai kemari, maka kerajaan ini milik aku, dan kemudian singgasana ini telah menjadi milikku. Kamu harus pergi dari kerajaan ini. Begitu beraninya Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu, karena di dalam dirinya ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat sahabat dikatakan juga bahwasanya orang-orang daripada Raja Rustum tadi mengatakan kepada raja, wahai raja, raja ini kan memiliki kekuasaan yang besar, memiliki singgasana yang hebat, prajurit-prajurit yang begitu banyak, kekuatan-kekuatan yang hebat. Kenapa kau takut sama satu orang ini yang lemah dan hanya memiliki kendaraan yang kecil, keledai saja, dan senjata dia tidak miliki yang hebat? Tetapi raja, kenapa kau gentar sama dia? Kenapa raja kau takut sama dia? Maka Raja Rustum ini mengatakan,
mengatakan, kamu tidak tahu, kamu lihat dialah, kamu lihatlah dia, keadaannya seperti ini saja, yang mana dia tidak bawa pasukan, dia hanya datang dengan kendaraan yang lemah, dia datang dengan senjata yang tidak kuat, dan dia datang dalam keadaan lemah lusuh seperti ini. Berani dia bicara di depan aku, bagaimana lagi kalau dia bawa bala tentaranya? Bagaimana lagi kalau misalnya dia bawa kekuasaannya, kawan-kawannya, maka hancur nanti kerajaan kita ini. Maka akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja Rustum ini tadi menyerah kepada Ribi bin Amir dan takut, gentar kepada kekuatan sunnah yang dilakukan oleh Ribi bin Amir radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, beginilah hadirin yang mulia, apabila ada sunnah yang melekat kepada diri kita masing-masing, maka orang-orang yang melihatnya akan gentar dan takut kepada kita. Tapi hari ini keadaan kita, orang-orang Islam takut kepada orang-orang kafir. Hari ini orang-orang Islam telah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena hari ini orang-orang Islam telah meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Islam telah meninggalkan kesederhanaan. Hari ini orang-orang Islam telah meninggalkan amal-amal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat orang-orang kafir, orang-orang lain tidak takut melihat orang-orang Islam. Malah orang-orang Islam takut kepada orang-orang kafir. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Taala, Hazrat kita juga mengatakan bahwasanya apabila orang-orang Islam ini menyempurnakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap satu orang Islam, orang-orang yang melihat mereka, maka akan gentar terhadap mereka karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, एक बड़ी खूबी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ये है कि कोई माहौल उनको मुतासिर नहीं करता था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की। आज मुसलमान माहौल से मुतासिर हो जाता है। ये ऐसे लिबास का माहौल है, ये टोपी पहनने का माहौल है, ये टोपी उतारने का माहौल है, ये सुन्नत पर अमल करने का माहौल है, ये सुन्नत को छोड़ने का माहौल। बड़ी उम्दा बात हमारे हज़रत फरमाते हैं, वो मुसलमान जो माहौल को देखकर सुन्नत को छोड़ रहा है और माहौल को देखकर सुन्नत पर अमल कर रहा है, वो सुन्नत का जिंदा करने वाला नहीं है, सुन्नतों का मिटाने वाला है। ये मुसलमान की अलामत, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो दिल के अंदर है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इस कलमे की अलामत है। अलामत सर से लेकर पांव तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर होगा, तब ये मुसलमान अपनी अलामत के एतबार से पहचाना जाएगा। ये फरमाया गया है, ये मुसलमान की अलामत है कि इसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह। ये सहाबा इकराम की सिफत। कोई माहौल इनको मुतासिर करता नहीं था। आजकल लोग माहौल से मुतासिर होते हैं। हजरत मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है, बड़ा उम्दा वाक़या है। हजरत मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बड़े लोगों के दरमियान बैठे हुए। आजकल लोगों से मुतासिर होते हैं लोग, ये वज़ीर हैं, ये बादशाह हैं, ये कंपनी वाले हैं, ये ऑफिस वाले हैं, ये मुलाजिमत वाले हैं। इन माहौल से मुतासिर होता है मुसलमान। हजरत मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बड़े लोगों के दरमियान बैठे हुए थे, शुरफा के दरमियान। इसमें वज़रा भी हो सकते हैं और ताजी भी हो सकते हैं। बड़े बड़े लोग, रिवायत के अंदर आता है, कुछ खा रहे थे, खाते हुए लुकमा गिर गया, इस गिरे हुए लुकमे को उठाकर खाने लगे। उलमा इकराम ने लिखा है, ये गिरा हुआ लुकमा नापाक ना हो गया हो तो इसको उठाकर साफ करके खाना सुन्नत है। इस सुन्नत को मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अदा कर रहे थे। किसी ने कहा, आप बड़े बड़े लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं, वज़रा के दरमियान बैठे हुए हैं, ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, क़यामत तक मुसलमान को जवाब सिखलाया है, क़यामत तक आने वाले मुसलमान को जवाब सिखलाया है। जब भी कोई मुसलमान किसी मुसलमान को टोका जाए सुन्नत के मुताल्लिक, तो ये जवाब दे जो जवाब हज़रत मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है। फरमाया, अअतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं इन बेअक़ल लोगों की वजह से, क्या मैं इन बेवकूफ़ लोगों की वजह से अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को छोड़ दूँ। ये जवाब सिखलाया है कि मुसलमान को सुन्नत के मुकाबले कोई अमल पेश किया जाए तो मुसलमान ये कहे जो हज़रत मिक़दाद इब्न असवद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े को छोड़ दूँ इन बेअक़ल लोगों की वजह से। ये फितरी मोहब्बत की अलामत है। हमारे हज़रत फरमाते हैं, ये फितरी मोहब्बत की अलामत है कि कोई माहौल इनके अमल को मुतासिर नहीं करता था। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya Hazrat kita mengatakan
sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah mengamalkan setiap amalan-amalan sunnah tanpa terkesan kepada suasana dan keadaan. Dalam setiap suasana dan keadaan, maka mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan keadaan kita sekarang. Hari ini kita lihat bahwasanya keadaan suasana ini orang pakai topi pet semua, maka kita pun ikut pakai topi pet. Kita tinggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mungkin pakai celana yang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka kita pakai seperti itu juga. Kemudian orang-orang meninggalkan sunnah Nabi dalam suatu lingkungan atau suasana, maka kita ikut pada suasana tersebut, kita tinggalkan sunnah Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini orang-orang melihat orang-orang kaya, melihat orang-orang yang punya jabatan, melihat orang-orang pedagang, melihat tajir-tajir, melihat orang-orang yang hebat dari segi keduniaan, maka terkesan keadaan mereka, terkesan dengan suasana mereka, sehingga kita pun merubah penampilan kita, merubah keadaan kita yang harus full sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita terkesan kepada mereka. Beda dengan sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, yang mana sahabat tidak pernah terkesan dengan suasana dan keadaan, suasana apapun dan keadaan apapun, mereka tetap mengamalkan, menyempurnakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Apa saja sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selalu mereka sempurnakan dalam setiap saat dan keadaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu orang sahabat, Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu dia diundang dalam satu perjamuan, dan kemudian dalam perjamuan tadi ada orang-orang besar dari segi keduniaan. Mungkin ada orang yang memiliki harta yang banyak, ada pedagang-pedagang yang hebat, ada orang-orang pengusaha yang hebat, mungkin ada juga pejabat seperti mana menteri-menteri dan raja-raja duduk di dalamnya. Maka dia ikut duduk bersama dengan mereka dan kemudian mulai makan. Pada waktu makan, maka terjatuh bagian daripada makanan tadi di atas daripada seberang. Maka kemudian dia ambil dan kemudian dia kembali makan, karena memang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada makanan yang jatuh dari tangan kita kepada di atas seprah yang mana tidak menyebabkan najis, maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali dimakan, diambil dan makan kembali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada waktu itu yang dilakukannya, dia ambil makanan yang jatuh tadi dan kemudian dia makan lagi. Satu orang mengatakan, wahai Tuan Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, engkau melakukan seperti ini, apa engkau tidak malu dengan orang-orang yang berada di sini? Ada pejabat di sini, ada menteri dan ada orang-orang kaya. Seharusnya malu untuk mengambil makanan yang telah jatuh, karena yang telah jatuh tersebut biarkanlah terjatuh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, dengarkan apa yang dikatakan oleh Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu ini untuk menjawab terhadap orang-orang yang mana menyuruh kita untuk meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi pelajaran kita, kapan saja dan siapa saja yang mana dia ada orang mengatakan kepadanya untuk meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan Miqdad radhiyallahu taala anhu katakan, apakah aku harus tinggalkan sunnah kekasihku, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena orang-orang yang bodoh dan tolol ini? Begini yang dikatakan Sayyidina Miqdad radhiyallahu taala anhu, apakah aku harus tinggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang yang bodoh dan tolol ini? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu juga kepada kita, harus ada semangat dan jazbah dalam setiap suasana dan keadaan. Maka kita jangan terkesan kepada suasana dan keadaan, jangan terkesan kepada apa yang berada di depan mata kita. Yang di depan mata kita, di hadapan kita hanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun suasananya, apapun keadaannya, kita sempurnakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. फिर मेरे महतरम दोस्त, रिवायत के अंदर लिखा हुआ है, ऐसी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से थी कि आपके तरीक़ों पर अमल की कसरत की वजह से सहाबा इकराम को दीवाना कहा जाता है। दीवानगी होती है ना, इश्क होता है, इश्क और मोहब्बत की इंतहा के बाद फिर दीवानगी शुरू होती है। ये हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के दीवाने। रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते हुए रास्ते में एक जगह बैठ गए, जैसा क़ज़ाए हाजत हो। क़ज़ाए हाजत नहीं थी। लोगों ने पूछा, जब आपको हाजत नहीं थी तो आप वहाँ क्यों बैठे? कहा, मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में यहाँ से गुजरते हुए यहाँ बैठे हुए देखा था, बस आपकी
इत्तिबा में मैं बैठा हूँ। जहाँ नबी बैठे हैं वहाँ नबी का उम्मती बैठा है। जैसा नबी ने पहना है ऐसा नबी के उम्मती ने पहना है। रिवायत में आता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आस्तीन बड़ी हुई थी। आस्तीन बड़ी हुई थी। लोगों ने कहा, किसी ने कहा आपकी आस्तीन सुन्नत के खिलाफ हो रही है। फरमाया कि छुरी लेकर आओ। इस आस्तीन को काट लिया। इसके धागे ऐसे ही निकले रहे। जैसा नबी का लिबास है वैसा नबी के उम्मती का लिबास है। रिवायत के अंदर आता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह आज लोगों ने देखकर कहा, उस्मान मक्के मुकर्रमा वालों ने, क्योंकि मक्के में जो तकब्बुर की अलामत होती थी, जिसका जितना माल है उसका उतना लंबा लिबास है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आधे पिंडली तक इज़ार पहना हुआ। लोगों ने कहा, ये क्या हुलिया है उस्मान? फरमाया, मैंने अपने नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी हुलिये के अंदर देखा है। जैसा नबी का पहनना है ऐसा ही उम्मती का पहनना है। जैसे नबी के पसंद है वही पसंद उम्मती की है। रिवायत के अंदर आता है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह गए, हाजिर हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह खाने की दावत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में आता है, लौकी बहुत पसंद कर रहे थे। लौकी को आप चुन चुन कर खा रहे थे। आपको लौकी खाना पसंद था। दुब्बा कहते हैं लौकी, आपको लौकी पसंद थी। रिवायत के अंदर आता है अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी खाते हुए देखा। फरमाते हैं, लौकी का खाना पसंद आ गया। इसको खाना पसंद करने लगे। जो नबी की पसंद का खाना है वही उम्मती की पसंद का खाना। ऐसी जिंदगी बनाई है। ये होती है इत्तिबा सुन्नत। अपनी जिंदगी का हर पहलू, हर ज़रूरत वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पूरा हो। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana mahabbah, cinta sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada setiap satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat cinta sekali kepada setiap satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dikatakan tergila-gila dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yaitu terasyik. Orang yang suka kepada seseorang maka dikatakan dia asyik. Suka kepada sesuatu maka dikatakan asyik kepada sesuatu tersebut. Maka begitu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, begitu asyiknya sampai akhirnya di atas daripada derajat asyik lagi tadi, yaitu tergila-gila, majnun, tergila-gila kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu tergila-gilanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain kepada setiap satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada celah bagi mereka untuk meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengamalkan sunnah, menyempurnakan sunnah karena memahami bahwasanya ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Kita sekarang ini memahami ini adalah sunnah Nabi, sunnat Nabi, maka ini adalah sunnat, maka kita tinggalkan karena ini bukan fardu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kali satu orang sahabat Abdullah radhiyallahu taala anhu pada waktu melakukan safar, maka pada waktu melakukan safar tersebut dia turun dari kendaraannya dan kemudian dia menepi untuk melakukan seperti mana orang yang buang hajat. Maka dia pergi ke tempat tersebut untuk buang hajat, tapi dilihat oleh orang-orang dia hanya duduk saja dan dia tidak buang hajat dan dia kembali kepada kendaraannya. Maka ditanya oleh kawan-kawannya pada waktu itu, "Wahai Tuhan, kenapa engkau turun dan kemudian engkau pergi? Kami pikir engkau akan melakukan buang hajat. Maka kami lihat engkau tidak buang hajat dan kemudian kau balik kendaraanmu." Maka dikatakan oleh sahabat ini, "Wahai sahabatku, dengarkanlah, aku pernah bersafar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat ini dan kemudian baginda Nabi turun dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qada hajat di sana. Baginda Nabi melakukan hajat, buang air besar di sana. Maka setelah itu baginda Nabi pun balik dan kemudian kami melanjutkan perjalanan. Aku mengingat bahwasanya inilah tempat turunnya Nabi dan itu adalah tempat buang hajatnya baginda Nabi. Walaupun aku tidak mau buang hajat, tetapi karena cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada apa yang dilakukan baginda Nabi, maka aku turun seperti mana turunnya baginda Nabi dan aku pergi di tempat seperti mana tempatnya buang hajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, begini tergila-gilanya sahabat, walaupun tidak buang air besar tetapi tetap pergi ke tempat yang mana baginda Nabi pernah
pergi ke tempat tersebut, pernah buang hajat di tempat tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kali juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dilihat oleh satu orang sahabat dan kemudian dikatakan kepadanya pada waktu itu nampak bahwasanya pergelangan daripada baju Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melebihi daripada pergelangan tangannya. Dan kemudian dikatakan kepadanya, wahai tuan, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai lengan baju yang mana melebihi daripada pergelangan tangan. Maka akhirnya sahabat ini tadi diperintahkan untuk mengambil gunting atau pisau dan kemudian langsung dipotong, dan kemudian yang lebih tadi pun dibuang, dan kemudian menjulurlah benang-benang tadi sehingga benang-benang tersebut dibiarkan karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada waktu memakai pakaian, maka Sayyidina Utsman bin Affan memakai pakaian sampai setengah betis seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada waktu itu orang-orang kaya yang mana mereka berbangga-bangga sebanyak mana kekayaan mereka, maka mereka tunjukkan dengan keadaan pakaian mereka. Kalau misalnya pakaian mereka lebihkan lebih banyak, berarti ini orang kaya yang hebat, orang kaya yang sangat kaya sekali. Ini merupakan kebanggaan bagi mereka pada waktu itu. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu makanya sampai setengah betis, maka sampai setengah betis juga dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaan sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian mereka, dalam seluruh hajat mereka, dalam seluruh keadaan mereka. Maka mereka tergila-gila dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak bisa meninggalkan satu sunnah pun dalam kehidupan mereka. फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ी अहम बात, ऐसा कुरानी जिंदगी का